लेट मी स्टार्ट विद द टाइमिंग फर्स्ट ठीक है। और फिर मूव करते हैं टीएफएसए में। सो एंड देन वील गो स्टेप बाय स्टेप। जिस तरह आपने कहा उसी तरह हम मूव हुँ, करेंगे। टाइमिंग में जो आई गॉट लकी है, मुझे पता नहीं था ये, बट आई मेरा मूव हुआ था जुलाई 1 को। सो मैं 6 महीने था इन कनाडा, 6 महीने था मैं इन यूएस। अच्छा, आप कनाडा में जो भी अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं, वो इनकम आपकी कनाडा में टैक्स होगी और जो इनकम मैंने यूएस में अर्न की है उस साल में, वो इनकम मेरी टैक्स होगी यूएस में। तो लेट्स से मेरी इनकम जो है वो टोटल है 200,000 कनाडा में। अब जब मैं जून को मूव किया हूँ, जून एंड में या जुलाई 1 को जब मैं यूएस मूव किया हूँ, तो उस साल मैंने 200,000 नहीं कमाए। उस साल मैंने कमाए हैं इन दैट ईयर 100,000 इन कनाडा। तो मेरा टैक्स ब्रैकेट जो है वो 200,000 का, लेट्स से अगर टैक्स ब्रैकेट 40 था, तो वो एकदम से जो है वो 25 या 30 पे चला गया। हुँ, तो मैंने कनाडा में उस 100,000 पे कम टैक्स दिया है एज़ अगेंस्ट जितना मैं देता। सो मेरा टैक्स रेट नीचे चला गया इन कनाडा। ब्यूटीफुल। अब जब मैं यूएस में मूव हुआ हूँ, तो यूएस में भी मेरे पास सिर्फ़ 6 महीने की इनकम दिखाने को है, क्योंकि मैं कनाडा की इनकम तो नहीं दिखा रहा। मेरा डे स्टार्ट होता है इन यूएस एज़ ऑफ जुलाई 1। तो लेट्स से मेरी यूएस में भी इनकम 200,000 है, बट टैक्स पर्पसेस के लिए जो मेरा ब्रैकेट होगा वो 100,000 होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ़ 6 महीने की सैलरी मिली है। तो सडनली मैंने कम टैक्स दिया उस साल कनाडा में भी ओवरऑल। हुँ, और कम टैक्स दिया मैंने यूएस में भी। तो ये एक अच्छी चीज़ है अगर आपने अपने कोई ऐसे, स्पेशली यूएस में ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आपका कोई कैपिटल गेन वगैरह हो रहा है, और इवन कनाडा में भी इम्पोर्टेंट है, रादर कनाडा में शायद ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, कि अगर आपकी कोई कैपिटल गेन एक आ रहा है और वो आपको कैपिटल गेन जो है वो आपको हाई टैक्स रेट पे लगेगा, क्योंकि जिस साल आप कैपिटल गेन लेते हैं उसका कैपिटल गेन में होता है ये कि जो भी आप कैपिटल गेन अर्न करते हैं उसका 50% पे आपको, देयर इज़ अ न्यू रूल व्हिच इज़ $250,000 से अगर अबव होगा तो हुँ, इंक्लूजन रेट चेंज हो जाता है। बट लेट्स कीप, अगर छोटा सा कैपिटल गेन है आपका $100,000 तक का, तो उसके 50% पे आपको टैक्स देना पड़ेगा और वो जो टैक्स आप देंगे वो अपना मार्जिनल टैक्स रेट देंगे। बट ये वो साल है जिसमें आपके मार्जिनल टैक्स रेट दोनों तरफ बिल्कुल टैंक कर गए। तो ये वो साल है जिसमें आप अगर थोड़ी-सी स्मार्ट प्लानिंग करें, तो यू कैन आल्सो गेट रिड ऑफ सम ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, जिसमें आप कैपिटल गेन्स अर्न कर लें, उस पे टैक्सेशन कम कर लें। सो दैट्स अनदर प्लानिंग दैट यू कैन डू ओवरऑल बेस्ड ऑन टाइमिंग। मुझे पता नहीं था ये, आई ओनली रियलाइज़ व्हेन आई स्टेप्ड इन यूएस, तो मैंने देखा कि मेरा टैक्स रेट जो है वो मार्जिनल कनाडा में भी कम है और यूएस में भी कम है। मैंने कहा अमेजिंग। बट अगर मुझे थोड़ा-सा पहले पता होता तो मैं थोड़ी-सी अच्छी प्लानिंग करके अपने कुछ एसेट्स ऐसे डिप्लीट कर लेता, जिसकी मैं कैपिटल गेन की एक्सरसाइज़ कर लेता। बट इन एनी केस वो शायद मैं उस वक़्त इसलिए भी नहीं कर सका, वो दैट वाज़ ईयर 2022, ऑल द स्टॉक्स वर डाउन, सो आई रियली डिडंट आई कुडंट, मतलब इन हाइंडसाइट में आई डोंट पेनलाइज़ माय सेल्फ अ लॉट, और क्योंकि मैं ये भी सोचता हूँ अगर मैं कुछ बेचता भी तो क्या बेचता? Are you a non US tax resident and looking to open a business in the US? Well, this video is very important for you, so watch it till the end. Basically, if you are a non US tax resident, which means you don't have SSN, which is your tax identification number, which means when you open a bank account or you open a Stripe account or PayPal account or Amazon business account or any business account, you need your SSN number in order to open any of these accounts in the US. Well, if you are a non-US tax resident, which means you don't have SSN with you, you can have another identification which is called ITIN. So ITIN is similar 9-digit number which is used for tax purposes if you are a non-US tax resident. So whenever you apply for a business account or bank account or payment processing account like PayPal or Stripe or even Amazon FBA seller, or registering a business in the US, you can use ITIN instead of SSN. This will help you to set up all of these things even though you're not a US tax resident. So if you're in Canada, Latin America, Europe, UK, Australia, or anywhere in the world, you can apply for ITIN and you can use ITIN to register a business, open up the business accounts, open up the payment processing account in the US, and pretty much do all the tax related stuff using ITIN even though you don't have SSN. One of the unique use case for ITIN is if you are a non-tax resident but you have a US based income. Like for example, you have a rental property in the US or any other business that is generating income from the US, then depending upon the tax treaty from your parent country, you may have to file taxes in the US. Right? So when you have to file taxes in the US, you need ITIN because you have to file your tax return on a Form 1040-NR. Okay, so if you are a non-tax resident, you need the Form 1040-NR
in order to file your tax return. And when you fill out that form, you will be required to enter your ITIN because you don't have SSN. So in order to enter your tax identification number, you have to have ITIN number ready. Okay, this is a very common use case for all the non-tax resident that is generating income in the US. They need to file tax return. Depending upon your tax treaty between your parent country, you may need ITIN as well. So how do you get that? Well, there are some companies available on the internet that will help you to get you the ITIN, but they may charge between $400 to $600 per application. We have a company called ITIN, and they are one of the quickest in terms of submitting the application. So they will help you out in terms of collecting the documentation, help you out in terms of answering your questions, and help you out in terms of submitting the application. Now, the typical application process times takes between 4 to 14 weeks, but the ITIN people only take 48 hours to collect the information, help you out in the journey, submit your application, and from that point onwards, it's basically IRS. IRS can take between 2 to 12 weeks depending upon their volume of the applications, but throughout the process, they will handhold you in terms of opening up the accounts, help you to open up the FBA account or Stripe account or PayPal account, or guide you in terms of the entire process. They're pretty quick to respond. They have people speaking English and Spanish and Arabic, and they can give you very competitive rates as well. Plus, if you use my referral link, which will give you extra $50 discount when you purchase their services. So if you are looking to open a business in the US, start your journey today, apply for ITIN. Even though if you're not looking to open a business now, you should have ITIN just in case in the future if you want to open a business, you're ready from tax standpoint. So check the link in the description below and let's get back to the video.